The next important thing is how to decide which dimensions or how many dimensions to keep and how many to discard. So we have original PCA या जितने PCA principal components हमारे पास निकलते हैं, they are equal to the number of features we have. If we had, let's say, 5 features in our original data sets, we'll get 5 principal components, or we'll get equal number of dimensions as using PC as we had in the original data set. इसमें से we keep the important ones. लेकिन उसमें भी you need to decide कि how many important ones, whether you'd like to keep 3 or 4 or 2, how many of these important ones do you want to keep. एक काम जो हम कर चुके हैं, we have sorted these. Sorting would benefit us in a manner that we know which ones are more important or causing more effect than the others. ठीक है? The next thing is which subset of these sorted ones to keep and which to discard. आसान तरीका क्या है? Sometimes we do that. We simply give a hard-coded value to k. ठीक है? तो मैंने कह दिया कि अगर 3 है तो 5 है, तो at least I need 3 values या 3 features in my which have been changed using PCA. But the more sophisticated techniques is using the proportion of variance. What it suggests is, proportion of variance suggests that you need to see that these new values retain how much information and how much of this information is discarded. Okay, let me say that again. Proportion of variance क्या करती है कि वो कहती है कि जब आप higher dimension से lower dimension में आ रहे हैं, तो of course you're losing information. जो आप 5 features से ले रहे थे और 3 से ले रहे हैं, you are losing some information. लेकिन ये information आप किस हद तक lose करना चाहते हैं? For example, अगर 5 features से 100% information मिल रही है, तो क्या 3 features से 80% information मिल रही है कि नहीं? ठीक है, या 3 features से 90% information मिल रही है कि नहीं? Your objective is deciding how much information loss is acceptable to you, whether you're good with any amount of information loss, or या हम उसके ऊपर कोई upper limit set कर देते कि भाई इससे ज्यादा जो है हमारे लिए acceptable नहीं. ठीक है, and then based on the amount of information that we are losing, we then decide value of k, or how many features we would be keeping. How do we calculate proportion of variance? जो हमारे पास eigen vectors थे, ठीक है, पहला काम हमने ये किया था, we sorted them. हमने उनको sort कर लिया और हमने ये देख लिया कि first की let's say कि ये eigen value जो है that is 9, second की eigen value है 3, third की eigen value है 1. ठीक है, और फिर मैंने देख लिया कि इन टोटल से मेरे पास कितनी इंफॉर्मेशन आती है, एंड आई से कि 391 इज इक्वल्स टू 13. ठीक है, तो आई टेक वन ग्रुप एंड सी हाउ मच इंफॉर्मेशन इट हेल्प्स मी रिटेन. तो अगर मैं सिर्फ 9 को कंसिडर कर लूं, तो मैं ये देख लेती हूँ कि 9 डिवाइडेड बाय 13 से मेरे पास कितनी फीसद इंफॉर्मेशन बच जाती है. ठीक है, 9 divided by 13 will give me a value that is closer to, let's say, 80%. Okay, and 80% is good enough to me, so I can just use one feature of which has the eigenvalue of 9. फिर मैं ये कर सकती हूँ, I can make the combination of 9 and 3, and 9 and 3 gives me the value of 12. And if I divide 12 by 13, I'd say I get more than 95% information. And 95% information is what I require. Okay, or I can then use this subset. So what you're actually doing is you're arranging your values in the order of highest importance, highest eigenvector, eigenvalue, and then using these eigenvalues you can see कि कौन से combination पे will give you the highest accuracy. अब then we set some value कि अच्छा चले 90% से ज्यादा हो गई है, तो that is acceptable to us. तो जिस भी पॉइंट पे या जिस भी कॉम्बिनेशन पे हम 90 की बाउंड्री को क्रॉस कर लेते हैं, we save that as our final set of values. Then how do you convert all of your input data into PCA? So far we have the row adjusted data,
रो एडजस्टेड डाटा, जो हम लोगों ने मीन के साथ डाटा का डिफरेंस निकाला था, वी हैव दैट। ठीक है, मीन एडजस्टेड डाटा था, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने रो फीचर वेक्टर के साथ, एंड द रो फीचर वेक्टर इज द आइगन वेक्टर दैट वी हैड, जो हमने उसकी बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट की थी। मल्टीप्लाइंग दीज टू वुड गिव यू द फाइनल डाटा। ठीक है, तो ये हमारे एक पूरे फीचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उन सबके लिए वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर देगा। दिस इज व्हाट इट वुड लुक लाइक। हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड डाटा क्या है, हमने जो अपने आइगन वेक्टर्स निकाले थे और जो हमने मीन एडजस्टेड वैल्यूज निकाली थी, उनकी मल्टीप्लिकेशन से वी गॉट दीज न्यू वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द फीचर्स। तो अब जो पहले हमारे पास x था, उसके corresponding we got these values, and for y we have these values. Graphically, the data that was spread on this axis, x-axis, is now on this one, and इसी तरह that was according to this y-axis over here, that now is over here. ठीक है, तो हमने वो जो मल्टीप्लिकेशन की उसके बाद हमारे पास नए डाटा सेट की शेप इस तरह की बन गई। In case we need to extract the original data from PCA, we can use the transpose of the row adjusted data and the final data that we just made. तो PCA से जो हमने नया डाटा निकाला था, उस वाले को multiply that with the row adjusted data and add the mean. This would give you the original data back. अगर हम एक PCA पे कंसिडर करें तो this was the original data, और अभी जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ओरिजिनल दोबारा निकाला है, तो दिस इज व्हाट वी गेट। तो इसमें सिंस वी केप्ट ओनली वन डिमेंशन, तो एक्स डिमेंशन के कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा हमारे पास स्टोर हो गया, और जो वाई डिमेंशन का स्प्रेड था, जो हमारे पास इस डिमेंशन में स्प्रेड था, वो हमने रिटेन नहीं किया। This is pretty close to the original one, and it does restore the or it does keep the essence of the original one. So this is again something कि एक तो हमने dimension कम कर दी, 2 dimension से we went into 1 dimension solution while keeping the essence of the data. So this is a good thing, and this is what PCA achieves. It gives us a close enough solution while reducing the number of dimensions that we are working with.